नमस्कार। तो कैंटो 6 थोड़ा सा रह गया था, वो ख़त्म करके फिर आगे का पढ़ूंगी। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल फोर ग्रेड्स ऑफ सोसाइटी with the Brahman as the foremost were fond of worshipping the gods and unexpected visitors. They were grateful, generous, heroic, and powerful. All the residents of that great city enjoyed a long lease of life and were devoted to virtue and truth, and as such were never deprived of their wives, sons, and grandsons. The Kshatriyas followed the lead of the Brahmins, the Vaishyas were devoted to the Kshatriyas, and the Sudras took delight in their own work while serving the other three Varnas. King Dashrath, the lord of the Ikshvakus, fully protected Ayodhya on all sides in the same way as the all-wise Manu, the ruler of mankind, did in former times. Like a cave full of lions, the city was thronged with warriors who had mastered the science of archery and were refulgent like fire, devoid of crookedness, and were unable to pocket insults. It was crowded with horses of excellent breed, born in the territories of Kamboj, Bahlika, Balk, as well as Vanayu river horses born in the Indus Valley. Horses that vied with the horses of God, Indra, known by the name of Uchai It was full of elephants in heat and mighty as mountains, born in the Vindhya and the Himalayan regions. The city was also ever crowded with elephants belonging to the races of Airavat, Mahapadma, Anjana, and Vamana, and those of the Bhadra, Mandra, and Mraga species born on the Himalayas and Sahaya range respectively, as well as those of crossbreeds known by the names of Bhadra Mandra Mragas, Bhadra Mandras, Bhadra Mragas, and Mraga Mandras, ever in rut, huge as mountains. Ayodhya, lit unassailable, bears a really significant name, particularly to a width of 2 yojnas or 16 miles out of its total width of 3 yojnas, 24 miles. While residing in this part of the city, King Dashrath protected the kingdom. Just as the moon holds sway over the starry regions, similarly the said King Dashrath, who was possessed of great glory and had destroyed all his enemies, ruled over the aforesaid city. In this way, the king, who vied with Indra, ruled over this blessed city of Ayodhya, which bore a significant name, was protected with strong gates and bars, and was graced with houses of various designs, and teemed with thousands of men. Thus ends Canto 6 in the Balakand of the glorious Ramayan of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Full stop. So इससे छठा सर्ग समाप्त होता है, और आखिर में भी हम वही देखते हैं कि जो चारों वर्ण के लोग थे वो सारे एक साथ रहते थे। ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंचा माना जाता था, वो लोग देवताओं की पूजा करते थे, एंड वो लोग बहुत ही हीरोइक थे, मतलब वीर थे, पावरफुल थे, शक्तिमान थे, एंड बड़े बड़े दिल वाले थे। एंड जो सिटी में लोग रहते थे उनका लाइफ स्पैन, जीवन का जो दीर्घायु बहुत थे वो लोग, एंड हमेशा सच बोलते थे, एंड वो अपने घर वालों को, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, पौत्र हो, ये इनसे कभी भी वो ऐसा कुछ नहीं करते थे कि उनको वंचित रहना पड़े। क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों के लीडर बाद आते थे, वैश्य जो थे वो क्षत्रियों के मतलब क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों से अपना लीडरशिप लेते थे, मतलब उनके अनुसरण करते थे, वैश्य क्षत्रियों का करते थे, और शूद्र जो है वो अपना तीनों वर्ण का सेवा करते थे, प्लस अपना काम बड़े खुशी से करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी किसी वर्ण के ऊपर किसी भी तरह का
दुराचार होता था या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो हम लोगों को नॉर्मली बोला जाता है। किंग दशरथ जो थे वो इक्ष्वाकु के वंशज थे एंड वो अयोध्या को प्रोटेक्ट करते थे। एंड वो मतलब जो मनुज थे, मनुज महाराज जो थे, वैसे ही ये भी अपने मतलब बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और वो मतलब अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से करते थे। एंड चाहे मतलब आप ये करो कि जैसे एक गुफा में पूरे शेर भर के हैं, सिंह भर के है, तो सिटी भी जो है ना वो नगरी के अंदर भी वो कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके बोल रहे हैं वैसे ही नगरी में भी बहुत सारे वीर धनुर्धारी योद्धा थे और उनको धनु बड़े अच्छे सकुशल धनुर्धारी थे और आग की तरह वो लोग अपना मतलब उनकी जो पर्सनालिटी था वो आग की तरह था एंड बिल्कुल कोई भी कपट नहीं था और मगर वो किसी भी तरह के बदतमीज़ी को नहीं सहन कर सकते थे, कभी भी उनका अपमान वो सहन नहीं करते थे। और चाहे मतलब फिर वो बताते हैं कि अलग अलग टाइप के घोड़े, अलग अलग टाइप के हाथियाँ वहाँ पे थे एंड राजा दशरथ इन सब का देखभाल खाली नहीं करते थे, इनकी प्रोटेक्शन भी करते थे। और इसी तरह ये राजा दशरथ जो इंद्र भगवान के साथ जिनका कंपटीशन था एंड वो अयोध्या में उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरह से अयोध्या का प्रोटेक्शन और अयोध्या का संचालन वो करते थे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, कैंटो 7, द वर्च्यू एंड अपराइट कंडक्ट ऑफ द 8 मिनिस्टर्स ऑफ एम्परर दशरथ. The ministers of this exceptionally high-souled King Dashrath, a scion of Ikshvaku, knew how to weigh the pros and cons of a problem, could read the mind of others, and were ever devoted to the welfare of their beloved master. In short, they were endowed with all virtues appropriate to a minister. 8 were the ministers of that heroic king who were glorious, pure of mind and conduct, and ever devoted to the interests of the king, that is the affairs of the state. They were Drishti, Jayanta, Vijay, Surashtra, Rashtravardhan, Akopa, Dharmapal, and Arthavit, Sumantra being the 8th. Vashishta and Vamdev, the foremost of seers, were his 2 beloved family priests and counselors too. And there were other counselors too, viz. Suyajna, Jabali, Kashyapa, a scion of Kashyap, and Gautam, the long-lived Markandeya, and Brahman Katyana. Along with these Brahman seers, his hereditary priests too were ever functioned as his counselors also. The ministers were all modest through learning, bashful by nature and clever, had fully controlled their senses, were affluent, high-souled, well-versed in the use of weapons, possessed of unbending prowess, glorious, valiant, true to their word, majestic, forgiving, and far famed. They spoke with a smile ever playing on their lips, and would never tell a lie even in anger or for the sake of sense, enjoyment, or wealth. Nothing connected with their own people or with others was known to them. Whatever was done or sought to be done by the people was known to them through spies. They were all tactful in their dealings with others and had been tried in the matter of loyalty, and meted out punishment even to their own sons strictly according to the law when occasion demanded it. They were ever intent on augmenting the state exchequer and consolidating the army, and did not persecute even an enemy if he was not found guilty. They were great heroes
with an undying zeal for warfare and followed the precepts of political science. They protected under all circumstances the people of good conduct in their state. They filled the coffers of the state without harassing the Brahman and the Kshatriya communities and inflicted heavy or small penalties, of course, after duly considering the abundant or meager resources of the offender and the gravity or otherwise of the offense committed by him. As a result of the ministers being all upright in their dealings, nay, of one mind and fully discerning, there was no man who told a lie anywhere in the city of Ayodhya, or for that matter, in the entire kingdom. Nay, there was no wicked man or one having liaison with another's wife anywhere in that city. On the other hand, the whole state as well as the aforesaid city of Ayodhya, the foremost of all cities, was perfectly tranquil, free from turmoil or tribulations. They were all finely dressed and well adorned and were of holy resolve. The welfare of the king, the state, was their sole purpose in life, and they were always wide awake, seeing everything with the eyes of prudence. Favored of the preceptor of the king because of their numerous virtues and celebrated for their prowess, they were universally recognized even in foreign lands, their conclusions being based on their intellect. They were qualified all round and were never devoid of virtues. They were conversant with the principles determining the propriety of peace and war and were naturally endowed with divine properties. They were capable of maintaining the secrecy of deliberations and further capable of subtle reasoning. They possessed a special knowledge of political science and always spoke kindly. Assisted by such qualified ministers as mentioned above, and priests and counselors free from all vices, Emperor Dashrath ruled over the entire globe. Out here, the kingdom, seeing everything with his eyes in the form of spies and protecting the people through righteousness, nay, providing maintenance for his subjects and abstaining from unrighteousness, the said tiger among men, who was munificent and true to his promise and well known as such in all the three worlds, ruled over this earth while residing in Ayodhya. He never met an enemy who could match, much less excel him in strength, and had a number of allies. The rulers of the adjoining territories bowed to him, that is, accepted his suzerainty, and all his enemies were got rid of by his very glory. In this way, the emperor ruled over the world, even as Indra, the ruler of the gods, reigns supreme in heaven, surrounded by the aforesaid counselors who had been charged with the act of deliberation and were devoted to the interests of the state, nay, who were clever and efficient and loyal to the king. The said monarch, Emperor Dashrath, shone with splendor even as a rising sun shines bright when joined with its glorious rays. Thus ends Canto 7 in the Balakand of the glorious Ramayan of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. अब इस वाले में हम क्या देखते हैं, कैंटो 7 में हम देखते हैं कि दशरथ जो थे ना, उनके दरबार में 8 मंत्रियाँ थी. जो मंत्रियाँ थे वो लोग एकदम मन के सच्चे थे और उनके आचार विचार में कोई भी कपटता नहीं था. और वो कौन कौन थे? दृष्टि, जयंत, विजय, सुरष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोपा, धर्मपाल, अर्थावित, सुमंत्र जो थे वो मेन थे. मीन्स आप कह सकते कि उनके प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ थे. वशिष्ठ और वामदेव जो थे वो इनको गाइड करते थे, वो महर्षि थे. ऋषि जो महर्षि एंड ऋषि थे वो इनको गाइड करते थे. ये इनके मतलब परिवार के पंडित, परिवार के गुरु
भी यही लोग थे। और उसके साथ साथ सुयज्न, जबाली, कश्यप, गौतम ऋषि, मार्कंडेय ऋषि और कात्यायन, ये सब ऋषि भी इनके ही राज्य से जुड़े हुए थे। और इन ब्राह्मणों के साथ साथ और भी परंपरागत प्रीस्ट्स, पंडित भी इनके साथ थे। मिनिस्टर्स जो थे वो लोग पढ़े लिखे थे और मतलब वो बिल्कुल अहंकारी नहीं थे और उनके अपने पूरे इच्छाओं पे, अपने जो सेंसेस थे उन पे उनका कंट्रोल था। और वो न्याय करने में वो लोग कभी हिचकते नहीं थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, मतलब गुस्से में भी रहे तो भी वो झूठ नहीं बोलते थे। और वो लोग जो है ना, जब भी किसी और के साथ उनका कोई भी आदान प्रदान होता था तो वो बड़े ही लॉयल थे। एंड अपने भी बच्चों को वो छोड़ते नहीं थे। अगर उनके अपने खुद के संतान को का भी अगर गलतियां होती थी तो उनको भी वो छोड़ते नहीं थे, उनको भी ज़रूर वो पनिश करते थे। और वो मतलब राज्य का मतलब कभी किसी को हैरस नहीं करते थे, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे, कभी उनको बिना मतलब के उनको आप क्या बोलेंगे, उनको कभी बिना मतलब के किसी भी तरह के उनको कष्ट नहीं देते थे। एंड किसी वहाँ पे अब ये जो राज्य था इसमें सभी सदाचारी थे। यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी गलत काम करते हुए नहीं मिलता था। अच्छे मतलब तरीके से वो लोग रहते थे, पिछले बार भी बोला था, इसमें भी। और उनका मतलब चाहे कपड़े हो, चाहे मतलब गहने हो, सब ये भरपूर इनका मतलब अच्छा रहता था, अच्छे तरह से वो लोग रहते थे। एंड उनके मतलब जो राज्य के कार्य में जो गोपनीयता रखना पड़ता था वो रखते थे। और उन लोगों को पॉलिटिकल साइंस में उनके ज्ञान था और वो बड़े काइंडली बात करते थे। एंड उनके मिनिस्टर्स के साथ वो प्रीस्ट्स थे, काउंसलर्स थे, और हर किसी का आप अगर देखोगे तो मतलब वहाँ पे सदाचारी लोग ही रहते थे। और ये राजा जी जो थे वो हमेशा विजिलेंट रहते थे, वो हमेशा ध्यान रखते थे कि राज्य का कार्य का कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मंत्रियों पे छोड़ दिया, लोगों के ऊपर छोड़ दिया एंड वो अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो कंटिन्यूसली वो हर कार्य में वो उनका मतलब देख रेख होता था। एंड वो काउंसलर्स जो थे उनसे घिरे रहने के बाद भी वो उनके मतलब चाहे दशरथ जी हो, चाहे उनके काउंसलर्स हो, चाहे उनके मिनिस्टर्स हो, चाहे वो ऋषि महर्षि हो, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था। और वो उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके अपने राज्य का उन्नति उनको देखना था और उसी के लिए वो हमेशा तात्पर्य रहते थे। इसके साथ आपका कैंटो 7 ख़त्म होता है आज यहीं। कल फिर आगे क्या पढ़ूंगी। नमस्कार।